Okay, so hello everybody, good morning, good afternoon by the way, and welcome back to the EduphoreIAS, the Hindu live class. Today, the date is 23rd of August, and today, the day is very important and historical one because we are all eagerly waiting for Chandrayaan's lander to land today, make soft landing on the south pole of the moon. Fine, in the evening, this will be telecasted, live telecast will start from 5:45 p.m. and the exact time when the lander is scheduled to land on moon's south pole today is the 6 6 o'clock, exactly 6 and 4, 6 hours 4 minutes. Fine, so definitely all of us will be watching the live telecast of that. But before that, let us quickly start our discussion. And first of all, let us take questions from yesterday only. So, ये दो questions आपको कल दिए गए थे. Quickly, I hope you have tried to solve them. देखते हैं. So, first statement is the Kaveri is an interstate basin that originates in Tamil Nadu and passes through Karnataka and Pondicherry. इस statement को थोड़ा सा मैंने change किया था and the statement is correct, but the thing is here, this is not originates in Tamil Nadu but Karnataka, originates from Karnataka and then passes through Tamil Nadu and Puducherry. ठीक है, Tamil Nadu and Puducherry, not Pondicherry, it's now Pudu, P-U-D-U, fine, Puducherry. So that's why the first statement is wrong. Second is the Harangi and Hemavati dams in Karnataka have been constructed on the tributaries of rivers Kaveri. Yes, because both of them are actually the this tributaries of Kaveri itself. So therefore statement 2 is correct, first is wrong. So correct answer is only 2, that is B. Second this question, subjective 1, is related to the PLI scheme features and what are the key features of the production linked incentive scheme? Why are low level assembly jobs not good in the long run? तो इसको कल हमने टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट पेज पे जो आपका आर्टिकल था उसको हमने डिस्कस किया था because there was a this research paper actually published by the former RBI governor Raghuram Rajan alongside the two economists, and in a reply to his you can say a kind of allegation where he said that India is actually not manufacturing mobile phones but rather just assembling, which is not good for the not good in the long run. So this is what in reply to the Mr. Rajan, minister, the junior IT minister, said that no, his somewhat claim is not correct, but at the same time he also because by giving us a stat, he said just only around 22% so far of this production of mobile, especially mobile phones, has been supported under PLI scheme. So first of all, how you need to start? You need to again follow the same IBC structure: intro, body, and conclusion. In intro, first of all, see the question is in two parts. First is key features of the production linked incentives scheme and why are low level assembly jobs not good in the long run. So there are two parts to this question and you need to address both the parts. Remember, you'll get marks only when you'll be addressing both the parts, not just one part. So first of all, हमें इसमें नहीं जाना कि what are the allegation, what are the counter claims or this reply to, but what exactly we need to keep in mind is what exactly PLI scheme. PLI scheme actually started 5 years back, and then production linked incentive scheme. First of all, you need to, in introductory line itself, need to mention this and define this actually PLI scheme, and then after that you can start with in the body part you can write it. The question was for 15 marks, so you can at the max write 4 or 5 lines in your introduction. Then after that, in body part you need to now cover two things in your body part. First is the features of the PLI
and in second part you need to cover why are low level assembly jobs not good in the long run. So both the part you need to address in your body part of answer. Fine. Apart from that, we discussed these both the things yesterday, and then finally we need to conclude. Of course, you need to conclude an affirmative, in a positive sense, and alongside that, you can also provide certain solutions as well. Fine, if you think so. Fine. So this is how actually you can address this question. Okay, moving to the today's newspaper itself. So, and of course, at the end we'll see questions from today's this analysis itself. तो चलो इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं what are the important things from today's newspaper. तो सबसे पहले फ्रंट पेज पे चलते हैं, देखते हैं कि फ्रंट पेज से आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. तो सबसे जो फर्स्ट न्यूज यू सी ब्रिक्स. तो ब्रिक्स की समिट जो है दैट इज अंडर वे इन साउथ अफ्रीकन जोहानिसबर्ग. ठीक है, एंड वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी पहुँच गए हैं, देख सकते हो आप. तो वहाँ पे ब्रिक्स के मिस्टर पुतिन जो हैं वो इन पर्सन प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, बाकी 4 कंट्रीज के जो हेड्स हैं वो पहुँचे हुए वहाँ पे. ठीक है, not the country's head but the government is head. Okay, so BRICS is a platform. This is what our prime minister said there yesterday, that BRICS is a platform for global south. Of course, India is projecting itself to be the leader of global south. Global south क्या होता है already many times we have discussed. So BRICS summit अभी चल रही है जोहानिसबर्ग में, आपको ये पता होना चाहिए. And August this 22nd to 24 ये टाइमलाइन है BRICS summit की. ठीक है. So because of Russian conflict and all resultant effects, so President Putin जो है वो he will take part in this conference through video conferencing only and not through being present in person. So you can see this is what our Prime Minister said there. Apart from that, apart from this, then you see Chandrayaan 3 lander all set for touchdown today. This is what I mentioned in the this starting our class, that is timing 6:04 p.m. on Wednesday, 6 hours 4 minutes. Fine. And around 5:40 p.m. itself, the mission operation complex mocks at ISRO telemetry tracking and command network IS track Bengaluru will initiate the powered descent of the lander module. Fine. So this 19 minutes from 5:45 p.m. to 6 hours 4 minutes, this 19 minutes going to be very, very critical, crucial for this mission. Fine, because this at the end of this will come across or come to know whether we have been successful or not. Fine. Okay. So key dates you can say, and this is the date we have been waiting for, that is August 23rd today itself. So powered descent to start at 5:40 p.m. and touchdown, that is final landing on the surface of the south pole of the moon at 6:04 p.m. Fine. So all of us and should in fact become the witness to this historic moment. And live telecast will start from this 5:45. Of course, you can see. So do watch this today's historical day, a moment. So currently it's the 15th BRICS summit that is going on, and this is the first in-person meet since 2019, fine, and the COVID-19 pandemic, the first since the Russian war in Ukraine, and the first time that Mr. Modi and Mr. Xi will take part in such a restricted gathering of just 4 leaders since the LAC standoff began in 2020. So there are many firsts going to happen. Fine, in person first time, Mr. Our Prime Minister and the President of China is going to meet. And apart from that, you see this is the first time, or 15th BRICS summit, the current one is going to be the first in-person meet since 2019, or you can say post COVID-19 pandemic. Apart from that, Manipur Assembly to convene on August 29. Finally, the Governor Ansuya Uki on Tuesday summoned the monsoon session of this 60-member assembly. Fine, तो 60 strength है इसकी यहाँ की मणिपुर असेंबली की. ठीक है, अगस्त 29, जैसा कि हमने देखा था कि कल भी डिस्कस किया था कि वहाँ के गवर्नर ने डिनाई कर दिया था. ओके, इन्फ्लेशन प्रेशर्स में लिंगर बट फूड प्राइसेस टू ईज सून. सो ऑफ कोर्स हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो
हमें लंबा देखने को मिल सकता है कि महंगाई जो है वो काफ़ी टाइम तक रहने वाली है, बट फूड प्राइजेस टू ईज सून। ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे टोमेटो प्राइजेस जो कि 300 तक पहुंच गए थे, कहीं ना कहीं ईज होनी स्टार्ट हो गई है। एंड यस्टरडे अगर कल की बात करें तो इट वाज समवेयर अराउंड 60 per kg. So of course you see that food prices easing. This is said by Ministry of Finance in its July review, monthly review. Price pressures were driven by global disruptions and domestic factors. So inflation के context में दो terms याद रखना. First is headline inflation, जो जनरली न्यूज़पेपर जब भी आप रीड करते हो आर्टिकल्स आपको मिलता है. Headline inflation means overall inflation we are talking about. Then their second term is core inflation. Headline inflation or retail inflation, one same thing. Second thing is we talk about core inflation. So when you talk about core inflation means headline inflation minus food and fuel inflation or food and fuel prices. Food plus fuel prices जब आप इसमें से minus कर देते हो because these are the volatile factors. So you just come across the core inflation. ठीक है. So ultimately अगर food and fuel prices होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी core inflation जो है of course आप देख सकते हो कि कम होती नजर आए, हेड होती नजर आएगी, चाहे ओवरऑल इन्फ्लेशन आपकी ज़्यादा देखने को मिल सकती है. ठीक है. सो देयरफॉर दिस इज द केस. एंड इसमें मेजर जो रीजंस दिए गए हैं वो डोमेस्टिक एंड ग्लोबल या इंटरनेशनल दोनों ही रीजंस मेंशन्ड है इसमें. तो व्हाट आर दीज रीजंस? तो ग्लोबल में देख सकते हो एज पर द लेटेस्ट एफएओ फूड प्राइस इंडेक्स. तो सबसे पहले तो आपको यहीं से पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए कि फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है. सो इट इज एफएओ, दैट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ. ठीक है. So इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग फूड इन्फ्लेशन showed an uptick in July after a continuous decline since April 2022. So जुलाई में कहीं ना कहीं हमें uptick देखने को मिला है, that is increasing. And termination of Black Sea grain initiative. Black Sea, so of course because of Ukraine and Russian conflict, this United Nations actually brokered a grain deal between these two countries so that Russia could allow the shipping of grains or wheat especially or sunflower oil from, let us say, Ukraine to the rest of the world. Fine. But recently Russia has terminated this deal. Fine. So this termination has again disrupted the supply of wheat and sunflower oil. So again it will lead to or add to the inflationary pressure globally. And then domestic disruptions. So interruptions in the supply chain of tomatoes. You can see that tomatoes के prices 300 तक पहुंच गए थे due to white fly disease in Kolar district of Karnataka, because Kolar is now major producer or supplier of, you can say, tomatoes. And the swift arrival of monsoon in North India caused a surge in tomato prices. तुअर दाल की बात करें तो प्राइस ऑल्सो स्पाइक ड्यू टू डेफिशिएंट प्रोडक्शन. प्रोडक्शन ही अगर कम होगी तो ऑफकोर्स डिमांड तो उतनी ही रहनी है, ज़्यादा डिमांड बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाली. जो दाल खा रहे हो तो खाएंगे ही. तो देयरफॉर वी सी की मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई and therefore ultimately resulting in higher prices. So again inflation. So we have both the factors, global and this local, or you can say domestic one, that will linger on our inflation, linger on inflation in the economy. Okay, this is the Delhi page, local page. Then moving to the next pages, states pages. So the CM of Rajasthan has launched Mission 2030 to make Rajasthan leading state. Suggestion would be sought from people from all walks of life, including experts, academicians, students, traders, for preparing a vision document for the state's progress, says the Chief Minister. ठीक है. So इन्होंने साथ में ये भी जोड़ा है कि this has nothing to do with assembly polls. तो फिर CM साहब से पूछना चाहिए था कि अभी क्यों, 6 महीने पहले क्यों नहीं, या साल पहले क्यों नहीं. Anyhow, you can understand, you guys are intelligent. Okay. So again, politics going on only. We can safely skip these pages. Okay. NASA ESA, that is European Space Agency, to support ISRO during moon landing today. Fine. So all both these agencies are supporting India's Chandrayaan-3 mission. Fine. You can see the ground stations of NASA and European Space Agency have been supporting Chandrayaan-3 mission from the time of its launch. Fine. So you can see a coordination between the global agencies.
better example of coordination between the global agencies. ठीक है. Apart from this, a strong case to restore section 8 clause 4 of the representation of people act 1951. तो इसी सेक्शन के अंडर अगर आप देखोगे तो मिस्टर गांधी, राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था पार्लियामेंट से, बट अब उनको रीइंस्टेट कर दिया गया है. ठीक है, ऑन द दिस द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो आरपी एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात कर रहे हैं हम, 1951. ठीक है. सो द राइटर इज फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा. ठीक है. तो इसमें सारा कुछ डिस्कस करने वाली चीज नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 84 है क्या, प्लस वन ऑफ द केसेस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज फेमस केस रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन, एंड दैट इज लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है. सो यू कैन सी कि सुप्रीम कोर्ट ने द डिस्क्वालिफिकेशन वाज इंस्टेंट बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज जजमेंट इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2013. तो यू सी कि मिस्टर गांधी को डिस्क्वालीफाई इमीडिएटली कर दिया गया था ऑन द दिस जजमेंट ऑफ दिस गुजरात लोकल कोर्ट. ठीक है. सो टाइम नहीं दिया गया था एक्चुअली अपील करने के लिए कि हाँ आपके पास 3 महीने या 4 महीने का कुछ टाइम दिया जाए कि आप अपील कर सको. इमीडिएटली उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था लोकसभा से. ठीक है. सो 84 जो सेक्शन 84 ऑफ द आरपी एक्ट 1951 है वो यही कहता है, मतलब कहता था अनलेस एंड अनटिल इस केस के अंडर इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 क्लॉज 4, इसमें अगर डिस्क्वालिफिकेशन की लेटर से सिचुएशन इमर्ज भी होती है तो उसमें ये प्रोविजन था कि एटलीस्ट 3 मंथ की जो है वो पीरियड दी जाएगी रिप्रेजेंटेटिव्स को, दैट इज MPs को, so that they can file appeal before higher courts. But disqualification was not to take effect during this period of the time that has been given during the 3 months. When the appeal is admitted, disqualification would depend on the final outcome of the appeal itself. ठीक है. So legal provision के according there was no instant disqualification of sitting members of the legislature, but after the court struck down this provision of the Representation of People Act 1951, according to the opinion of some experts, sitting legislator is disqualified the moment the court orders conviction and sentence under section 8(3) of the Representation of the People Act. ठीक है. समझ गए कि इसलिए जैसे हम काफी लोग ये कह रहे थे कि थोड़ा सरकार को वेट करना चाहिए था, मौका देना चाहिए था कि राहुल गांधी जी जो है वो हायर कोर्ट में लेटेस्ट से गुजरात हाई कोर्ट जाते हैं, लोकल कोर्ट की जो जजमेंट थी उसके अपील फाइल करते उसके अगेंस्ट, बट सरकार ने इमीडिएटली क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया. तो ऐसी प्रोविजन है एक्चुअली. सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में ही ये कह दिया था कि नहीं जी, जो आप वो दे रहे हो, जो आप अपील के लिए टाइम दे रहे हो 3 महीने की, वो जरूरत नहीं है, नहीं जरूरी है. ठीक है. सो इसलिए तो उसके लिए लीगली गवर्नमेंट वाज करेक्ट इन इट्स डिसीजन, यू कैन से. सो द टॉप कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट आर्टिकल 102 Clause 1 does not create any difference between the sitting member and a candidate so far as disqualification is concerned. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पे इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था कि कहीं ना कहीं जो 102 आर्टिकल 102 क्लॉज 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस नहीं किया गया है बिटवीन द सिटिंग मेंबर ऑफ अ हाउस मींस MP एंड अ कैंडिडेट सो फार एज डिस्क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, कि जो चुनाव लड़ना चाहता है. It held that Parliament has no power to grant exemption to sitting members for 3 months and thus struck down Section 8 Clause 4 as ultra vires to the Constitution. ठीक है. Ultra vires means you are doing something beyond your authority. आपको कानून बनाने का हक ही नहीं है, उस पर राइट ही नहीं है, बट फिर भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो. So we call it ultra vires on the basis of which actually Supreme Court struck down any provision which is not in conformity with the constitution or in conformity with the power granted to the executive by the constitution. Okay, so this is the technicalities, but what else, what is important for us is the last paragraph, no qualitative change. तो लिली थॉमस केस में जो जजमेंट है उसके बाद क्या कुछ चेंज देखने को मिला? राइटर ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला. इन फैक्ट the judgment in Lily Thomas has not resulted in any perceptible qualitative change
इन क्रिमिनल प्रोक्लिविटी ऑफ पॉलिटिशियंस. प्रोक्लिविटी होता है इट्स inclination towards something. So you can see of course majority of the you can see even there are you can see there are numbers of politicians who are who is having of course criminal backgrounds, antecedents, cases बहुत हैं उनके against, फिर भी they are becoming the MPs and MLAs. So of course he is saying that repeating the same thing, politicians belonging to the powerful ruling dispensation at a particular time may be able to get conviction stayed within few hours, but opposition party may not get the same. This is what he is saying. So this and other cases shows that section 8(4) needs to be restored and protected constitutionally in order to protect the careers of India's legislator from abrupt convulsions caused by court orders. तो ये कहते हैं कि जो राइटर के जो एम्फेसिस है वो इस पे है, इस बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो सेक्शन 8 क्लॉज 4 है उसको रीस्टोर किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस 2013 में कहीं ना कहीं उसको नल एंड वार डिक्लेयर कर दिया था. ठीक है, बिकॉज ही इज सेइंग कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो करियर है ऑफ इंडियन लेजिस्लेटर्स, एमपीज, रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज एक्चुअली टेकिंग सडन, you can say a convulsion is something sudden change or sudden movement of change, you can say. So abrupt convulsions caused by the court orders. ठीक है, कहीं ना कहीं उनके करियर पे ही क्वेश्चन आ जाता है, which are given in the words of the Supreme Court itself that without any application of mind. सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको रीइंस्टेट किया मिस्टर राहुल गांधी को, सो उसमें यही कहा था कि गुजरात की जो लोकल कोर्ट थी उसने कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं शो किया, didn't apply its mind, fine, in disqualifying him for the under this section. ठीक है, so it's up to you, or you can say of course this is harsh reality that things has not been changed much, ठीक है, with respect to the criminal antecedents and backgrounds and all, especially in the politics. Next is, this is a page actually the Hindu has dedicated whole of its this opinion page today to Chandrayaan 3, and of course the mission deserve this as well. So you see rover का जो name है that is प्रज्ञान, I hope आप सब लोगों को पता हो. There are certain information which are important. मिशन लाइफ जो है रोवर की that is 1 lunar day, रोवर एंड लैंडर दोनों की मिशन लाइफ 14 दिन की, 1 lunar day that is एक दिन जो चंद्रमा का है, मून का है, that is equivalent to 14 अर्थ डेज. क्यों? क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे है ना 24 आवर्स में जो है वो क्या है, अर्थ जो है वो एक चक्कर लगा लेती है. सो उस केस में होता क्या है कि चंद्रमा पे ये दिन जो है वो कितना लगता है, ऑलमोस्ट 14 डेज. सो 14 डेज के बाद जैसे हमारे यहाँ रात दिन दोनों देखने को मिलते हैं, वहाँ पे 14 डेज के बाद ही सनराइज या सनसेट होता है. ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज इक्वल टू 1 lunar day. ये सब इतना देखने की जरूरत नहीं कि क्या क्या स्पेसिफिक डिटेल्स क्या हैं, बट पेलोड्स आप ध्यान रख सकते हो. 2 टफ नट. व्हाई टफ नट वी आर सेइंग टू दिस मिशन? बिकॉज हिस्टोरिकली 40% ऑफ द मून मिशंस हैव फेल्ड अमंग रोबोटिक लैंडर मिशंस सच एज चंद्रयान 3. बिकॉज रोवर को हम लैंड कराने जा रहे हैं. जो लैंडर है, रिमेंबर लैंडर लैंड करेगा, बताता हूँ अभी मैं. उसके अंदर से आपका रोवर निकलेगा एंड फिर आप वो रोवर जो है वो स्टडी करेगा साउथ पोल की. सो दिस इज कॉल्ड रोबोटिक लैंडर मिशन. ठीक है, रोबो है, जो रोबोट है वो लैंडर से बाहर निकल के स्टडी करेगा साउथ पोल की. वेयर अ स्पेसक्राफ्ट परफॉर्म अ कंट्रोल लैंडिंग ओवर द लूनार सरफेस, द फेलियर रेट हैज बीन हायर. सो इन केसेस में जैसे चंद्रयान 3 मिशन है जहां पे हम रोबोटिक लैंडर मिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस केसेस में फेलियर के चांसेस है वो 60% तक बढ़ जाती है. मींस 60% है, जबकि हिस्टोरिकली 40% ऑफ मून मिशंस हैव फेल्ड. ठीक है, कन्वेंशनल अगर हम बात करें तो. सो देयरफॉर only 3 countries till now have made soft landing on using this robotic lander on the moon so far, that is the US, Russia, the then being part of the USSR, and China. Recently, 2 days back, you know, Luna 25 mission of Russia has failed. Fine. तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि लूना 25 मिशन जो है किस कंट्री का है, बिकॉज एट टाइम्स यूपीएससी डज आस्क क्वेश्चंस but you might be asked to match the given missions with the country or the space agency itself. ठीक है, so slow and steady, this is how the big this lander. तो प्रज्ञान जो है अपना रोवर है, एंड जो विक्रम जो लैंडर जो है उसका नाम है विक्रम, ध्यान रखना.
ठीक है, ये सेम नेम्स चंद्रयान 2 में भी थे, वहीं से कैरी किया गया है, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। So this is how the things are going to be made in different stages and finally you see final में क्या होगा। तो अगर मैं एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दूं तो यहाँ पे भी मेंशन होगा 90 मिनट्स इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि 5:45 PM से डिसेंट जो है स्टार्ट हो जाएगी एंड 6:04 फाइनल जो टाइम है शेड्यूल है वो उस टाइम पे लैंड करना है। सो 19 मिनट्स जो है ऑफ सस्पेंस, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल टाइम और फॉर दिस मिशन। आफ्टर बीइंग लॉन्च्ड बाय LVM-3 rocket on July 14, 2023, the Chandrayaan-3 spacecraft raised its orbit around the Earth before slinging itself towards the moon. ठीक है, the fate that befell Russia's Luna 25 mission shows how many opportunities there were for failure, and so far Chandrayaan-3 has overcome them. ठीक है, तो अभी तक सक्सेसफुल रहा है, only we are left with the last stage, but the toughest phase of the mission is expected to begin at 5:45 PM today. In case any conditions disfavor landing, ISRO has said it will try again in a month or probably on the 27th of August itself. ISRO will try to land make landing of this lander Vikram again. Okay, because there is issue, and the issue is the sunrise. The landing is somewhat related to the sunrise at moon. Fine, because why so we are concerned with so much of sunrise? Because the lander and rover are charged by solar panels. Remember, the time at which they land should coincide with sunrise at their location on the moon. इसलिए important है कि हम ये जो टाइम विंडो हमारे पास है आज एंड 27th की भी होपफुली 27th of August और अदरवाइज अगेन इन अ मंथ, बिकॉज मैंने कहा कि 14 डेज सनसेट 14 डेज सनराइज वहाँ पे देखने को मिलता है, तो ऑफ कोर्स 1 Earth day is equal to 14 days. So again, after a month only we can get such kind of window. So therefore we'll have to wait again for a month. ठीक है, but we are praying, we are hopeful that today will be successful and won't be waiting for another month. Another month for the same mission. Remember some facts, some stats. Lander and rover together have 6 payloads to study the local properties of the area नियर द मून साउथ पोल. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट ये मिशन क्रिटिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सेंस में भी है कि अभी तक किसी भी मिशन ने, एक चीज का ध्यान रखना कि साउथ पोल की स्टडीज नहीं की है इतनी. ठीक है, साउथ पोल जो है मून का, नॉर्थ पोल नो डाउट काफी एक्सप्लोर किया जा चुका है, बट जो साउथ पोल है समवॉट इट रिमेन्स स्टिल अनएक्सप्लोर्ड. ठीक है, सो इसलिए जो एक्सप्लोर ही नहीं किया गया जिस पोल को, एटलीस्ट वहां पे अगर इंडिया कोई मिशन भेज रहा है तो इसलिए ये मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड नॉट जस्ट अबाउट आवर कंट्री, अबाउट इंडिया, बट मेजर जो नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी देख रहे हो कि वो भी कोऑपरेट कर रही है इसरो के साथ. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ पोल की, मून की. ठीक है, फॉर द ग्लोब, फॉर द होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट फॉर इंडिया. ठीक है, बट हम इस मिशन को लीड कर रहे हैं. ठीक, so let us see what is going to happen at 6:04. ओके, सो अगर क्विकली हम थोड़ी सी और डिटेलिंग देख लें तो चंद्रयान 1, दिस इज चंद्रयान 3. सो आपको थोड़ी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि हमने मिशन स्टार्ट कब की. तो चंद्रयान 1 वी स्टार्टेड इन October 2008. द सैटेलाइट ऑर्बिटेड द मून मोर देन 3400 times. The mission concluded when communication with the spacecraft was lost on August 29, 2009. ठीक है, so spacecraft after commuting for 3400 times in 2009, after almost you can see August, September, October, around 10 months of the mission, we lost. The ISRO lost the communication with the spacecraft, and therefore the mission was concluded. Chandrayaan 3-1 orbiter confirmed water on मून यूजिंग मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स. सो चंद्रयान 1 ने ये प्रूफ जस्टिफाई किया था कि वाटर जो है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है मून पे. चंद्रयान 2 मिशन की अगर हम बात करें तो दिस वाज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 22, 2019. It comprised an orbiter, lander and a rover to explore the south pole region of the moon. So this is not the first time that Chandrayaan 3 is making
or trying to explore the south pole of the moon. We have this, already under Chandrayaan 2 mission, we actually wanted to explore the same south pole. Fine. So this is not the first time we are trying, but we have already tried under Chandrayaan 2 mission itself. So in this mission, India made its first attempt to soft land a robotic lander on the lunar surface. However, the landing module failed to complete its controlled descent that will start today at 5:45 p.m. Fine. And subsequently, communication between the lander and the ground stations were lost. And this is how this mission was concluded. Fine. So, and currently we are at, of course, Chandrayaan 3. The mission we are waiting for. So what will happen at the final stage? Let us have a little bit idea. So as the lander is hovering, it will re-evaluate whether it can resume its downward movement or if there are safer places to land. So descent is basically downward movement, and it will re-evaluate whether it can make safe landing within 150-meter radius. If it finds a safer place, it will move over to that point while dropping by some distance. Then in less than a minute or so, it will descend to the surface of the south pole of moon. And if it does not find a safer place, the lander will continue to descend from 150 meter towards the ground in a little more than a minute. In both cases, it will have to touch down at no more than 2 meter per second. ठीक है, अभी इसकी स्पीड मिशन की 2500 किलोमीटर पर की स्पीड थी इसकी. ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड की समवॉट, किलोमीटर पर आर नॉट सेकंड. एंड देख रहे हो इस स्टेज पे हमें 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड रखनी होगी. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज चैलेंजिंग इन एक्चुअली. ठीक है, बट वी आर होपफुल दैट विल बी सक्सेसफुल टुडे. फाइन, एंड दिस इज हाउ द थिंग्स गोइंग टू हैपन. यू सी, दिस इज आवर लैंडर विक्रम. ठीक है, ये फाइनली लैंड करेगा मून के. अनदर चैलेंज, एक और चैलेंज की हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो मून की सरफेस है वो रग टोपोग्राफी है. रिमेंबर, मींस क्रेटर है, वहां पे गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे, गड्ढे. इट्स नॉट लाइक प्लेन एरिया. ठीक है, सो वहां पे लैंड कराना इसको ही अपने आप में बड़ा चैलेंज है. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो प्लेन सरफेस. तो आप समझ सकते हो कि जब रग टोपोग्राफी होती है, जब क्रेटर, तो क्रेटर मीन्स वहां पे गड्ढे जो हैं एक्चुअली, तो इस तरह से चैलेंजिंग है कि कहीं ये डैमेज ना हो जाए, क्रैश ना कर जाए. ठीक है, सो दिस इज आवर द शेप ऑफ एक्चुअली लैंडर विक्रम, एंड इसी के अंडर आपका रोवर है. ठीक है, एंड मैंने एक्सप्लेन भी किया था अपनी क्लास में, वीकली करंट अफेयर्स में, कि दिस इज लाइक अ कॉकरोच एक्चुअली, यू कैन से रोवर, एक्चुअली रोविंग ऑल द वे. सो देयरफॉर इसमें से निकल के आएगा एंड फाइनली इट विल study the details or the properties of the south pole of the moon, and it will send the information to the this orbiter, and the orbiter will send the same information to the ISRO headquarters. Okay, and this is how we'll get the much needed information. So let us wait for the evening, not just more than, almost 12:45 about to happen. So 5:45 we have 5 hours still to go. And understanding the failure of Luna 25, from this article we need not to go in detail. Just keep in mind, as I said earlier, Luna 25 जो mission है वो किस country की है and किस space agency की है. So an answer is first Russia, and for the second question Roscosmos, that is space agency of Russia, Russian space agency. So बस आपको ये दो चीज पता होनी चाहिए. ठीक है, ओके. नेक्स्ट जो आर्टिकल है छोटा सा, ये इंपॉर्टेंट है काफी, एंड दैट इज रिलेटेड टू द ऑन प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कर रहे हैं. ठीक है, प्रोटेक्टिंग इट्स बायोडाइवर्सिटी. सो अभी एक रिसेंट केस हुआ है, केस है दैट इज जिस केस की सुनवाई में मेघालय की जो हाई कोर्ट है उसने कुछ कमेंट किया है. हम देखते हैं उसमें जजिस ने क्या कहा है. सो to aim for a $10 trillion economy without protecting India's environment is a goal not worth pursuing. This is what being said by, this is what actually the truth. So you see कि केस जो है, जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, in the recent case of cleanliness of उमियाम लेक वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय 2023. सबसे पहले तो यहीं से प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन जाता है, दैट इज उमियाम लेक जो है
कहाँ लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है? तो द आंसर इज मेघालय, उमियाम लेक. दिस इज फॉर फ्री. ओके, सो द डिवीजन बेंच मीन्स इसमें दो जजेस बैठते हैं. ऑफ द चीफ जस्टिस एंड जस्टिस another justice in its order states that in absence of any other employment opportunities and in the name of promoting tourism, the natural beauty of the state should not be destroyed. Yes, अगर कोई और अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के नहीं है किसी सेक्टर में, किसी और फील्ड में, या तो हम यहाँ टूरिज्म के नेम पे हम जो है वो नेचुरल ब्यूटी जो है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ, यहाँ बायोडाइवर्सिटी है, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय देम. द मेघालय हाई कोर्ट वाज हियरिंग अ PIL ऑफ कोर्स, तो हमें इसमें नहीं जाना इतनी डिटेलिंग में. द बायोडाइवर्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया. Northeast India is a green belt region due to its abundant natural resources such as oil, natural gas, mineral and fresh water. Of course, Northeast is very beautiful. You can see all the greenery, lush green, and now Mizoram has the highest percentage of, in fact, this forest under it, the area under its forest cover. The Garo, Khasi and Jaintia hills of Meghalaya and the Brahmaputra Valley are some of the most important biodiversity hotspots in the northeastern region. So though the northeast is industrially backward, deforestation, floods and existing industries are causing serious problems to the environment. An environmental assessment of the Northeast Rural Livelihood Project undertaken by the Ministry of Development of the Northeast region, that is DONOR, that is Ministry of Donor Development of Northeastern region, lays out that Northeast India lies within ecologically fragile, biologically rich region, highly prone to climatic changes, located in transboundary river basins. ठीक है, ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड ऑल. सो ट्रांस बेसिन है बिकॉज ब्रह्मपुत्र सांगपो एज अ सांगपो तिब्बत से ओरिजिन होती है एंड देन फ्लोज आउट थ्रू ऑफ कोर्स दिस making syntactial bend in Arunachal and then follows further flowing towards Assam and this all Meghalaya. So therefore both flora and fauna of these areas are under threat due to deforestation, flooding and all such things. ठीक है, माइनिंग, क्वायरिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बिकॉज शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली एक फील्ड को छोड़ के दूसरे फील्ड पे मूव कर जाते हैं. कीप ऑन शिफ्टिंग योर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस बिकॉज मोस्टली these northeastern areas dominated by tribal population and tribal population still believes in conventional kind of cultivation, especially shifting cultivation or slash and burn cultivation जिसको भी कहते हैं हम. ठीक है, environmental laws. So thus far considerable number of environmental laws and policies have been developed in the country, especially during the 1980s, but remember there is a provision under of course, so under section 268 to 290 of the Indian Penal Code 1860 dealing with the pollution of land, air and water. However, as a sixth schedule, so we have fifth and sixth schedule dealing with the scheduled areas, fine, and with respect to the special powers that has been granted to the president and governor of the state under this schedule. So sixth schedule की अगर particularly हम बात करें, of the constitution grants autonomy to DCs, that is district councils. It limits the authority of the state over matters pertaining to the jurisdiction of the district councils, including the use of land. ठीक है, so यहाँ पे बात करता है sixth schedule आपकी district councils की, and in fact even sixth schedule limits the authority of the state over matters which actually comes under the jurisdiction of district councils. So in many instances, like in the case of Umiam Lake, the district councils do not place any regulations for the preservation and protection of land, especially those around water bodies. So district council कह लो इतनी effective नहीं है, या because of any reason कहीं ना कहीं जो responsibilities हैं उसको ठीक से नहीं execute कर पा रही. So PILs and judicial activism encouraged under Article 32 and 226 of the Constitution lead to a wave of environmental litigation. Of course, you know कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है अंडर आर्टिकल 32, आप डायरेक्टली PIL फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में. अगेन इट्स अ फंडामेंटल राइट, एंड 226 हैज द सेम writ jurisdiction of the high court, and in fact remember that writ jurisdiction of high court under 226 article 226 is far greater than the writ jurisdiction of supreme court under article 32. ठीक है, सो इसलिए इसमें भी एक PIL फाइल किया गया था जो हमने केस डिस्कस किया अभी. ठीक है, सो द प्रेसिंग प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, मुद्दा तो हमने डिस्कस कर लिया, वेयर वी शुड फोकस एक्चुअली.
Solution. So central and state governments have to develop infrastructure, generate revenue, and create employment through sustainable policies. The negative list in Northeast Industrial Development Scheme 2017 is a step in the right direction. Negative list करता क्या है? So if an entity is not complying with, let us say, environmental laws और standards, not having applicable environmental clearances, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले आपको environment clearance लेनी पड़ती है मिनिस्ट्री से, then or does not have consent from the concerned pollution boards, जैसे स्टेट की pollution board भी है, सेंट्रल की pollution boards हैं, it will not be eligible for any incentive under this any IDS. Any IDS is what? The Northeast Industrial Development Scheme 2017, and you will be put on the negative list therefore, क्योंकि आपने in compliance comply नहीं किया जो भी compliances थे उनके अंदर, so therefore you will be put on the hold or under negative list. Similarly, the Act East for Northeast policy should not only include trade and commerce but also the preservation of environment and ecology. Act East, fine. Act East हमारे एक Act Fast for Northeast, not this Act East, pardon. So similarly the Act Fast for Northeast policy, ठीक है, so ऐसी policy should not only include trade and commerce but also the preservation of environment and ecology, ठीक है, और biodiversity in short. To aim for $10 trillion economy without protecting India's environment is a goal not worth pursuing. The government should consider the case of creating uniform environmental legislation which caters to environmental issues at all levels of governance. ठीक है, कि सरकार को इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए. ठीक है, so smaller one but in fact impactful one. ठीक है, let us now have a quick look at the miscellaneous facts. So rules will be made to curb vulgar languages on social media, said by the government in its affidavit filed in Delhi High Court. Okay. The challenge faced for enacting appropriate law, guidelines and rules to regulate the content on social media and on OTT platforms needs urgent attention. This is what said by the Delhi High Court, underlining the current challenges facing over such media platforms. Okay. Now, causing floods is a terrorist offense in law proposed to replace the Indian Penal Code, that is Bharatiya Nyaya Sanhita Bill. So, causing floods would be treated as terrorist offense. Okay. What else important here? Politics only. So we can skip these pages. जो वाइस प्रेसिडेंट और यू कैन से द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इन्होंने एक्सप्रेस कंसर्न ओवर हाउस डिसरप्शंस एंड फ्रीवीज. ठीक है, बस ध्यान रखना. गोयल जो मिनिस्टर है हमारे, मिनिस्टर स्पेशली सो मिनिस्टर ऑफ यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, उन्होंने अर्ज किया अनियन ग्रोवर्स को नॉट टू गो फॉर पैनिक सेलिंग. कई बार होता है कि सस्ते में बिक रहा है या लगता है कि रेट और कम होने वाली है फ्यूचर में, तो पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है कि सस्ते जितने रेट मिल रहा है उसी भी बेच दो, फटाफट बस बेच दो. ठीक है, उन्होंने कहा कि इस तरह की ना करें ऑनियन ग्रोवर्स. हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट. भारत एनकैप, सो India to get its own car crash testing program from October on the lines of what is the full form first? Bharat New Car Assessment Program. Bharat NCAP is modeled on the lines of Global New Car Assessment Program, a project of Towards Zero Foundation, which is a UK registered charity that promotes the universal adoption of the United Nations motor vehicle safety standards worldwide. Fine. So India has launched its own NCAP, or you can say car crash testing related program. That's a good thing. Fine. Okay, Collegium wants court to reflect India's diversity. ठीक है, कि जो भी अपॉइंटमेंट जजेस की हैं उसमें भी कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी बनी रहे, that people are becoming or appointed as judges from across the spectrum, be it gender, caste, grade and all. Yes. Okay, Japan to release water from Fukushima nuclear plant. So it will be a cause of concern.
Thai parliament elects Srettha Thavisin as PM. So थाईलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ध्यान रखना, Srettha Thavisin as PM of थाईलैंड। ठीक ठाक रिलेशंस हैं हमारे थाईलैंड से, अच्छे रिलेशंस हैं इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स में, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अफ्रीकन यूनियन ने देखो बाहर कर दिया नाइजर को फ्रॉम इट्स दिस यूनियन और ब्लॉक ओवर कू, वहां पे तख्ता पलट हो गया, मिलिट्री ने रूल करना स्टार्ट कर दिया डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के, ठीक है। तो इसलिए what else important from the miscellaneous facts, just quickly. Now finally we have landed on the sports page, and probably that's it from the day. Okay, something from here. How the deadliest virus in human history paved the way for new cures. Okay, so this is a kind of, okay, so this is a virus, which actually caused great influenza epidemic 1920 somewhat. ठीक है, so lung damage, suggestive unraveled a new benchmark. So this is a kind of a study actually, research paper. ठीक है, the series of these researchers. So you see that applicants wanted to recreate the H1N1 influenza virus which had killed around 15 million people in an outbreak in 1918 from its genetic material. So the virus is H1N1, remember, जो influenza cause करता है, and influenza viruses are almost always circulating among humans, always. The nature of virus means that every year the virus genetic material undergoes some minor changes, rendering it a little different from the virus of the previous year. ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन हैं वही डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू द इन्फ्लुएंजा वायरस, सारा कुछ स्टडी पेपर में जाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। ओके, दिस इज द लास्ट पेज। ओके, so an influenza virus can also infect birds, pigs, horses and other domestic animals apart from the humans. It can assort the types of two genes it contains. So what are the genes actually we see or find in the influenza virus? Let us say H1N1. So these genes are there are two genes in total. The number one is hemagglutinin H and second is neuraminidase, that is N. So H and N, बस इतना भी याद रखोगे तो आइडिया आ जाएगा। लास्ट में टिनिन एंड मिनिडेस, इतना भी याद रखोगे तो you can remember. In these animals to generate a new virus altogether, some of which may infect humans as well. So you can say कि जो viruses human animals में इन दो जीन्स की वजह से, चेंजेस की वजह से इन दो जीन्स में एनिमल्स में जो वायरस जनरेट हो रही है वो कहीं ना कहीं ट्रांसमिट हो सकती है टू ह्यूमंस एज वेल, ठीक है। And all these complications ensure that designing an effective vaccine for influenza remains challenging, ठीक है। तो वैक्सीन एफिकेसी जो है, वैक्सीन जो डिजाइन करने की बात चल रही है, दैट इज चैलेंजिंग एंड दैट इज ऑफ कोर्स वी नीड इन वैक्सीन फॉर इन्फ्लुएंजा, फाइन। So that's it. I mean, these are the technical points related to this. That's all. बाकी तो स्टोरी है आपकी जो मेजर इन्फ्लुएंजा रिलेटेड पैंडेमिक हुआ था उससे रिलेटेड, सो वी विल नॉट बी गोइंग टू दैट, जस्ट रिमेंबर दिस मच, ठीक है। H1 and N1, सो इसीलिए नाम ही इसका H1 and N1 पड़ा। H1 and N1 क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ द टू जीन्स एक्चुअली जो हमने बात की यहाँ पे, हेमाग्लूटिनिन H एंड न्यूरामिनिडेज N, सो H and N, ठीक है, fine. So that's it as far as today's editorial, today's Hindu is concerned, today's Hindu analysis is concerned. So therefore, before we stop here, let us quickly take questions from the today's Hindu itself, ठीक है, as your homework, and then we'll stop for the day. चलो, so quickly देखते हैं कि आज के questions क्या हैं जो आपने solve करना है as a homework. So of course चंद्रयान मिशन से related ये question है, बनता भी था. So consider the following statement: चंद्रयान 1 was launched in the year 2008. हमने ये सब बातें डिस्कस कर लिए हैं. And Chandrayaan 2 was launched in the year 2013. Chandrayaan 3 landed for the first time trying to make landing on Moon's south pole. Chandrayaan 3 lander and rover have total of 5 payloads to make a study of the south pole. And
you need to choose the correct pairs. ठीक है, कि कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से, ये आपने देखना है. सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज फॉर 10 मार्क्स in to be written in 150 words, and though the northeast is industrial backward, deforestation, floods and existing industries are causing serious problems to the environment in the northeast region, and you need to comment for 10-mark question in 150 words. Fine, so that's it from my side. If you have any query, anything, you can put the same in the comment section. Until then, take care, keep revising, and stay tuned for tomorrow Hindu analysis. Thank you.